दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझ में आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास के योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रहे। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है, ऐसा नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है।
8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। हर कैटेगरी पहले की तुलना में अनेक गुना हम देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो। मेरे प्यारे परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे, 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना, ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती है, उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपये दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में दी, और आज देश में 1,000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं।
लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर, शहरों में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी का आपको होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल कर रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है,
तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़कर लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, ये हमारी कार्यशैली रही। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी। लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके जाता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछते हैं 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिया। ये मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने। पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेज, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना
बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है, और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे, बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों को पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिस्ट एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए एकता का संदेश। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है, तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाना होगा, और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है, और उसके महत्व को स्वीकार कर करके
वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से भारत विविधताओं से भरा देश, असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया का के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे। अब हमें रीजनल एस्पिरेशन को, संतुलित विकास को बल देना है और रीजनल एस्पिरेशन को लेकर के उस भावना को हमें सम्मान देते हुए, जैसे हमारी भारत मां का कोई, हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविकसित रहे तो हमारा शरीर विकसित नहीं माना जाएगा। हमारा शरीर का कोई अंग दुर्बल रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का कोई तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा बैठ करके हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशन को हमने एड्रेस करने की आवश्यकता है और इसलिए हम समाज का सर्वांगीण विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत है। हमने उन सारे लोगों को, सारों को आधार पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के जब मैं एकता की बात करता हूं, तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है। अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, ये हमारा सामाजिक भी दायित्व है, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी है और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है, तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा करना, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती है क्या? उसमें कहता है, मैंने उसको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अतिरिक्त था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी, और इसके लिए एक नया अभिगम मिलेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000
विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे परिवारजनों का, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, हाईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में हमने, आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बढ़ गया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है। हमने डॉक्टर की सीटें बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है। अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है। अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आया है। मेरे प्यारे परिवार, हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बॉल अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था। मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दे, तीसरा कहा था वुमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मैंने चौथी बात कही थी, 5वीं महत्व की बात, और भारत ने उस दिशा में रहा, और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई
चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ, वन हेल्थ। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है, उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है और इसलिए कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्री शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है। और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नीयत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए
पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा कुछ विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार में दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है ये। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासी, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं है। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुने हुए तो लोग कहते हैं मोदी ऐसा करता है, जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते हैं वो मैंने रोक दिया। तो आप पे तो कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे?
ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करें। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, ये हमारा गुनाह है। ये हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश। Hello, I'm Saise Hornbill TV. India Buro de Aji 15th August 2023 Day, 77th Independence Day celebrate Korease. Nation first, always first. Laga team under day. Today Prime Minister Narendra Modi bra lead Korina national flag to Red Fort Delhi bra unfurl Korisha. Aro PM bra lead Korina Red Fort bra speech to India diase. Itu nishna desh laga stop jaga de Independence Day do manai jase. Aro Nagaland de bi Kohima de Chief Minister Nipirio bra flag to unfurl Korina speech dina jawa. It was 77th Independence Day do India garne dangor milestone ase desh laga journey. Independence Day pa bishide freedom, democracy
aru equality laga values kan opor reflect kuribole aru independence day pado India laga diversity aru unity celebrate korala din bi ase to itia alag alag jaga bra celebrate kurabor Hornbill TV bra dikhabo Delhi Kohima Dimapur aru Chumuke dima jaga khan nishna bra to itia to mohan live feed to Kohima bra hi ase tade kina jase idula opore mohan saw इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है, आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं, तो आपके लिए बहाता हूं। क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है। ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे,
सबके सपने अपने सपने पन पे सपने सारे। वीर चले वीर चले वीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। वीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही नीति सही, रीति नहीं। नीति सही रीति नहीं, गति सही गति सही, राह नहीं। गति सही राह नहीं। चुनो चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजन, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृत काल हम सबके लिए कर्तव्य काल है। ये अमृत काल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले जो पीढ़ी ने जन्म लिया था, उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे नसीब में देश के लिए मरने का मौका नहीं है। लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं। हमें पल पल देश के लिए। Ladies and gentlemen, please rise from your seats. The Honorable Chief Minister, Shri Nipiu Rio, has arrived. Salam!
I extend warmest greetings to everyone on the occasion of the 77th Independence Day. On this day we pay glowing tributes to the freedom fighters whose supreme sacrifices got us freedom after almost 2 centuries of foreign rule. In over 7.5 decades as a free nation, we have had remarkable success in many spheres of life by our sheer determination and perseverance. As the 5th largest economy of the world and the position that we have come to occupy in world geopolitics, we are now regarded as one of the most powerful and influential nations in the world. Our state Nagaland, which came into existence about 16 years after we attained independence, has marched on with other states in the nation's quest for development, progress and excellence. We shall continue to strive and contribute to the progress of our country. We remain committed to the core values of our Constitution, our democratic principles which remain the soul of our nation. This further got displayed in the fullest measure when the state underwent the conduct of general election to Nagaland Legislative Assembly in the early part of this year. We remain grateful to all the citizens of the state for participating wholeheartedly in the great democratic exercise which ensured that the whole election process was conducted in a free, fair and peaceful manner across the state. My government, which governed with a renewed mandate, which returned with a renewed mandate, reflects the faith that people have in us. And while thanking everyone for giving us another opportunity to serve, I assure you to continue to strive for fulfilling the expectations of our people. We remain deeply committed to the early solution of the Naga political issue, which has always been at the top of my government's agenda. I assure you of my government's making every possible effort to this cause. The Political Affairs Committee constituted with the entire cabinet and elected members from those tribes who are not in the cabinet will continue to hold serious consultations with all the stakeholders for early solution. Our hopes for further soared with the signing of the joint accordance in September last year between the NSCN-IM and the Naga National Political Groups, NNPGs, through the efforts of FNR for the resolution of the Naga historical and political rights with the Government of India. In January of this year, both entities have reiterated the unconditional commitment to collaborate for the resolution of the Naga political issue with the Government of India. I once again call upon all Naga political groups and all other stakeholders and the Government of India to exhibit an even greater sense of urgency for bringing consensus on any unresolved issue and for the sake of our people, bringing about an inclusive, honorable and acceptable solution without any further delay. Friends, we have been making every effort to reach out to every section and region to understand their aspirations. We appreciate, however, that despite our best efforts, the developmental division that existed right from the beginning still persists in some areas, particularly in the eastern districts of Nagaland. The ENPO resultantly has been raising the grievances of the people from the areas of the eastern districts and have made certain demands. I am happy that this is being looked into by the Government of India to suitably address them. We have been supporting the desire of the eastern districts to bridge the development deficit to bring them at par with the rest of the state, particularly in matters of infrastructure, development, health and education facilities, livelihood opportunities, and due representation in government service. The announcement of ULP election pursuant to the direction of the Honorable Supreme Court was strongly opposed by the tribal bodies and several CSOs on the ground of possibly infringement on Article 371A. The Legislative Assembly, heeding to the wishes of the people, unanimously decided not to go ahead with the ULP elections and repeal the Act, while resolving to bring a new legislation expeditiously. We are now in the process of taking steps for making a new Act. Chief Minister Srini Purio will now deliver his address. My dear fellow citizens, I extend warm greetings to everyone on the occasion of the 77th Independence Day. On this day, we pay glowing tribute to the freedom fighters whose supreme sacrifices got us
freedom after almost 2 centuries of foreign rules. In over 7.5 decades as a free nation, we have had remarkable success in many spheres of life by sheer determination and perseverance. As the 5th largest economy of the world and the position that we have come to occupy in the world geopolitics, we are now regarded as one of the most powerful and influential nations in the world. Our state, Nagaland, which has come into existence about 16 years after we attained independence, has marched on with other states in the nation's quest for development, progress and excellence. We shall continue to strive and contribute to the progress of our country. We remain committed to the core values of our Constitution, our democratic principles, which remains the soul of our nation. This further got displayed in the fullest measure when the state underwent the conduct of the general election in Nagaland Legislative Assembly, and in the early part of this year, we remain grateful to all the citizens of the state for participating wholeheartedly in the great democratic exercise, which ensured that the whole election process was conducted in a free, fair and peaceful manner across the state. My government, which returned with a renewed mandate, reflects the faith that people have in us, and while thanking everyone for giving us another opportunity to serve, I assure you to continue to strive for fulfilling the expectations of our people. We remain deeply committed to the early solution of Naga political issue, which has always been at the top of my government agenda. I assure you of my government making every possible efforts to discuss. The Political Affairs Committee considered with the entire cabinet and selected members from those tribes who are not in the cabinet will continue to uphold serious consultations with all these stakeholders for early solution. Our hope has further soared with the signing of the joint accord in September last year between the NSN-IM and the NNPGs through the efforts of FNR. For the resolutions of the Naga political issue and the historical right with Government of India, in January of this year, both the entities have reiterated their unconditional commitment to collaborate for the resolution of the Naga political issue with Government of India. I once again call upon all the Naga political groups and all other stakeholders and the Government of India to exhibit an even greater sense of urgency for bringing consensus on any unresolved issues and for the sake of our people bring about an inclusive, honorable and acceptable solution without any further delay.
friends who have been making every effort to reach out to every section and region to understand their inspirations. We appreciate, however, that despite our best efforts, the developmental deficit that had existed right from the beginning still persists in some areas, particularly in the eastern district of Nagaland. The ENPO resultantly has been raising the grievances of the people from the area of the eastern districts and have made certain demands. I'm happy those are being looked into by Government of India to suitably address their demands. We have been supporting the desires of the Eastern District to bridge the development deficits, to bring them at par with the rest of the state, particularly in the matter of infrastructures, development, health and education facilities, livelihood opportunities, and due representation in government service. The announcement of ULB, Urban Local Bodies election, pursuant to the directions of the Honorable Supreme Court, was strongly opposed by the tribal bodies and several civil society organizations on the ground of possible infringement of Article 371A. The Nagaland Legislative Assembly, heeding to the wishes of the people, unanimously decided not to go ahead with the ULB elections and repeal the Act, while resolving to bring a new legislation expeditiously. We are now in the process of taking steps for making a new Act in consultation with all the stakeholders. I solicit the cooperation and guidance of every stakeholders in this regard. In the last few weeks, the matter regarding the implementation of Uniform Civil Code UCC in the country raised deep anxiety among various sections of the society. Keeping in view the sentiment of the people, the State Cabinet has urged the Law Commission to exempt Nagaland from the purview of UCC in view of its serious implications on the privileges guaranteed under Article 371A. The Council of Ministers also met the central leaders and Honorable Union Home Minister. In this regard, I'm happy to share with you his assurance that UCC will not be applicable to the scheduled tribes of Nagaland and of the Northeast. Today, as I speak, I also can't help but talk about the very disturbing situation that prevails in our neighboring state of Manipur. The ethnic conflict in Manipur affected us as we had to immediately relocate our students and citizens from there in the interest of their safety, as well as being
in the first week of May 2023. Officials and staff from the administration, the NST department, and Nagaland Police, with assistance from the Assam Rifles, did a commendable job in safely bringing back more than 1,300 people of our state from Manipur. Everyone involved in this entire exercise deserves our fullest appreciation. We continue to, however, remain deeply concerned of the human atrocities committed and a large-scale vandalization and arson of places of worship, particularly churches in Manipur. We pray for good sense, peace and harmony to return, and fervently appeal to all the communities and groups in Manipur to give peace a chance and take urgent steps to resolve their differences amicably. Friends, I urge to accelerate the pace of development, got a boost with a very successful G20 business meet, which we hosted in the month of April 2023 at Kohima. The business met saw participation of 60 delegates from 27 countries, making the meet the largest among all the G20 meet held in the northeastern region. We received keen business interest from both national and international business. During the meet, with proposals and interest shown for investment of over 4,500 crores. Some major investment proposals received were in the areas of new renewable energy, healthcare, agri and allied, and many more. The state government is making concerted efforts to put in place appropriate policies to convert all the expressed business interests into projects on the ground. We continue to take steps to improve connectivity, and in the road sector, in Nagaland Vidodi Road and Bridges Department to complete road length of more than 4,100 kilometers and over 53 bridges over the years under PMJSY rural roads. During the current year, under various schemes and projects of Government of India, works are ongoing on roads of more than 1,200 kilometers for an amount of rupees 2,300 crores across the state. On the national highway entrusted to the state with OD, works are going on for posts to start soon for widening improvement in over 330 kilometers. The Department of Power, with an aim to provide suitable power supply in Dimapur and adjacent district, is proposing construction of 220/32/33 kV substation with associated transmission lines at Zatonse, Dimapur, and upgradation of Nagarjan substation Dimapur. Under schemes of the donor ministry,
Giving due importance to generation sector, the department has initiated development of 2 major hydroelectric projects, 42 megawatts lower diesel hydroelectric power and 22 megawatts at Zinki. The project was of rupees 541.22 crores and 368.53 crores, respectively, for funding under Asian Development Bank. Under the Department of New and Renewable Energy, the first major solar power plant at plant of capacity 5 megawatts in Nagaland is nearing completion at Hobiku village under Newland district. We have been making good progress in providing tap water connecting to all the households under Jal Jeevan Ministry. Out of a total target of 369.204 households, achievement of FHTC is 2,79,988 as of today. That is 75.84%. We plan to achieve 100% coverage of FHTCs by December 2023. Friends, agriculture sector still plays a pivotal role in the socio-economic progress in our state. To augment farmer income and to improve food availability, the Department of Agriculture is providing institutional support through various CSS. The state has formed the 8 farmers producer organization under Mission Organic Value Chain to develop for northeastern region, covering 23,000 hectares in 380 villages consisting of 26,607 farmers with an objective to develop crop-specific organic production cluster. Further, in order to promote post-harvest economic activities and also promote organic products, many structures have been created in Northeast Agri Expo site at Fort Miles, Chibukirima. One of the recent achievements is the construction of 120 bedded capacity farmers hostel and community marketing complex CMC. The Department of Horticulture during 2023-24 under Mission for Integrated Development of Horticulture scheme has identified 1 village in each district across the state as model village. The focus in this village will be on cultivation of single horticrops based on the economic potential and agri-climatic sustainability. Such model villages will ensure food security through scientific and sustainable farm practices, promote environment security, and ultimately emerge as model of self-sufficiency and economic well-being. The Department of Animal Husbandry and Veterinary Services is taking steps to protect our livestock from various disease outbreaks.
Several measures to boost productions of pork, poultry, eggs, and milk are being taken up in the state. To further support milk production, one portable liquid nitrogen plant of 20 LPD capacity has been installed and commissioned on 14 June 2023 in Mokokchung for increasing artificial insemination activities. The Department of School Education look a future step towards quality education when on 6 January 2023, the Honorable Union Minister of Home Affairs, Sri Amit Shah Ji, on a visit to the state, virtually inaugurated 9 Atal tinkering labs and 42 virtual reality labs. The department, through Nectar, is also implementing the teacher attendance monitoring system to ensure accountability of teachers and is expected to go live in September 2023 to tackle the shortage of science and mathematics teachers. 50 mathematics and 89 science graduate teachers have also been recruited. The Department of Higher Education, by creating a requisite number of posts of teachers and non-teaching staff, could make the 2 new colleges, namely New Model College, Watching, Mon, and New Model College, Mangalemba, Mokokchung, function from this academic session of 2023. In order to assist increasing number of students aspiring to pursue further studies in Hindi, and also for more than 1,500 untrained Hindi teachers in the state requiring professional trainings, we are pursuing for setting up of a Central Hindi Training Institute in Nagaland. The Department of Health and Family Welfare, by launching Chief Minister Health Insurance Scheme, has made Nagaland one of the pioneer states in the country to provide cashless health insurance, covering all the eligible citizens of the state. This launching of the scheme on 14 October 2022, 11,850 patients have availed the health insurance benefit under CMHIS and PMGAY put together. Further, with an aim to mitigate the acute shortage of the ICU in 12 district hospitals across the state of Nagaland. The 10-bedded ICU project, a public-private partnership project between the Department of Health and Family Welfare and partner NGOs, eGov Foundation, Karuna Trust, and HDFC Bank, got finally launched on 6th of January 2023. I feel elated to share you that our first medical college in the state, the Nagaland Institute of Medical Science and Research, is all set to start its first academic session for 2023-2024 with 100 MBBS seat capacity.
I congratulate all concerned who, with their efforts and hard work, make this project a reality. The work on Mount Medical College is also in progress. On the sports front and youth activities, I'm happy to inform that Nagaland women Sabak Takraw team brought laurels by winning 3 medals at the 33rd Senior National Sabak Takraw Champion held at Nagpur in April this year. Consequently, the men and women team have also qualified for the 27 National Games to be held at Goa next month. I extend my congratulations to Sri Venuzo Daho, who made the state proud by winning the Jing Wrestling Championship title held recently in the city of Indianapolis, Indiana in USA. Our Mahila Police Battalion made us proud by participating in the popular reality program India Got Talent Season 10 and winning the Golden Buzzer. I also congratulate the Faith in Action Martial Art Academy Dimapur on their stupendous feat of setting a new Guinness record, world record, for the highest assist martial arts kick recently on the set of India Got Talent on Sony TV. I acknowledge the Nagaland Chamber Choir for accomplishing the remarkable feat of winning 2 gold medals in the mixed chamber choir and contemporary choral music categories at the 12 World Choirs Games held in Gyeonggi, South Korea. I'm happy to share with you the endeavor of the Urban Development Department for developing a new modern planned city in the state. A detailed proposal for incubation of a new city has been submitted to the Ministry of Housing and Urban Affairs. The site identified for this new city is in Chhatri Valley in Chamukinwa district of the state. Spread over an area of around 39 square kilometers. The site has been selected keeping in view its favorable geolocation, climate condition, and very good connectivity by national highway and railways. The necessary no objection certificate from all concerned and the land had been taken out, and other formalities regarding having already been shown, having been completed. Several investment entities have already been shown interest in partner with the state government in developing the new township. The proposal of the state government is presently under evaluation in the Ministry of Housing
and Urban Affairs for selection, and we are hopeful of its early consideration. The Department of Rural Development, under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, MJNREGA, during 2022-23 generated 197.25 lakhs person days, providing employment to 4.21 lakhs households, covering 4.92 lakhs individuals. Under Amrit Sarovar Mission, launched in September 2020, Amrit Sarovar water body sites have been identified and 141 Amrit Sarovar works have been completed. The Department of Underdeveloped Area, DUDA, took up construction of Zenki Valley Bridge at Kipere under the Border Area Development Program, which was inaugurated by me on 28 April this year. The bridge will benefit about 35,000 people living in Pongro and Kyosun areas under UDAP. The department has implemented iconic projects in different locations in the 6 eastern districts, starting from financial year 2022-2023. Altogether, 20 iconic projects have been implemented with an aim to achieve tangible development with proper specifications and guidelines. The Department of Environment, Forest and Climate Change in the JICA project has so far covered 144 villages across the state. And in 3 phases, it will be covering a further 41 villages in the subsequent year. An area of 24,225 hectares have been brought under afforestation with 55.79 lakhs seedlings planted. Under the project, the department is also in the process of construction an eco park at Kohima. The department has started implementation of the second externally aided project called Forest and Biodiversity Management in the Himalayan Nagaland, under the Indo-German financial cooperations and funded by KfW Development Bank. The tourism department has been successfully promoting our traditional festival, from the celebrated annual Hornbill festival to the vibrant Naga tribal festivals. A tribute to the agriculture bounty of our land, these festivities are deeply ingrained in the Naga culture and have become a most attended event, attracting visitors from far and wide. And the department has been working tirelessly in preserving and showcasing them to the world. The Department of Arts and Culture
took up and successfully completed the new archaeological and heritage gallery at the State Museum, which was inaugurated on 10th May 2023. A separate Directorate of Minority Affairs has been created in April 2023 under the Planning and Transformation Department. It will give further impetus to the schemes of the Ministry of Minority Affairs being implemented by the state. Presently, under PMJVK, there are 9 ongoing projects, and as per the revised guidelines, PMJVK scheme will now be implemented in all the districts of Nagaland, including the aspirational district. Friends, I propose to the central government for sanction approving some identified major projects in our state, having tremendous potentials to boost the overall economic scenario, significantly improving connectivity and put state on the fast lane of development and progress. At G2, Kohima, which is the only state capital in the country without an airport, we have proposed an airport for operating ATR-72 class of aircraft initially, with sufficient provisions kept for future expansion, for handling bigger aircraft in a phased manner. We are also intensively pursuing with the central government for construction of the foothill road, Trans-Nagaland Highway, at the earliest possible. We are also making serious efforts to have the first Inland Water Corridor, National Waterway 101, Izazangi River in the state. We are also taking up establishment of an Indian Institute of Science, Education and Research in the state, which was announced in the Union Budget of 2015-16, along with Odisha, but did not materialize then. Moreover, in order to enable the medical college at Kohima to further grow and promote sustainability, we have taken up with the central government to consider converting into a central institute like the Regional Institute of Medical Science, RIMS, in Imphal, or an AIMS-like institute. We have sought the assistance of central government for helping complete the new High Court complex at Kohima at the earliest. With the sincere efforts of the direct district administration, police, the security agencies, all our tribal bodies, and civil society organizations, who have been successfully maintaining peaceful atmosphere and normal law and order situation across the state. We have taken up to further enhance the capability of our police and to improve the trust people in policemen. A significant step has been the installation of CCTV in all the 84 districts and 84 police stations across the state. I inaugurated the CCTV installation at the police station in Kohima district,
on 9 August 2023, and today, in all the districts, every district, the same would be done by the honorable ministers, advisors, MLAs who are hosting the flags today in their respective locations. In order to further enhance the reach of the police, 4 outposts, Sejong, Kiperi, Champang, CTKA have been upgraded to full-fledged police station, and a new police outpost has been set up at Chikidong. The newly constructed police station at Sobima, and another new police station at Atoiza, Zenabato were also inaugurated. Further, 6 new SDPO posts were also created in Agunato, Akuloto, Doyang, Jaluke, Melori, and Tobu. The housing infrastructure of the district administration saw significant progress and improvement with the completion of the DC office complex of Mokokchung and its inauguration. The DC complex of PEG has also been completed and would be inaugurated soon. The court infrastructure also has been further strengthened with the completion of construction of District Court Complex at Wokha, Zenaboto, Mokokchung, Phase 1 and 2. We are also making earnest efforts to further incorporate IT tools in our working system to enable efficient and effective governance. I'm happy to announce that e-office and e-vigilance to such IT tools will be launched today, which will further improve the service delivery and decision-making process of the government. Friends, we consider drug abuse and its battling a serious menace to the society in our state. And therefore we have resolved to give a further impetus to our war on drugs. We are taking measures to ensuring strict enforcement of preventing measures jointly by the major stakeholders like the churches, village councils, and the department concerns to eradicate this menace from our society. As a mark of our commitment towards war on drugs, today we all will also be taking a big pledge for drug-free Nagaland in the Independence Day program in all the districts and subdivisions. The state took a major step towards transparency and meritocracy when Nagaland Staff Selection Board, NSSB, for the first time carried a state-level recruitment examination for Group C vacant posts under various government departments. And after conducting the largest ever written exam in the state, with more than 50,000 candidates, declared its final results on 9 July 2023 for appointment of 587 staff under 45 state departments. I convey our appreciation to NSSB and all concerned for the successful and error-free conduct of the entire examination process. As we celebrate this Independence Day,
Amongst Azadi Ka Amrit Mahotsav, to commemorate 75 years of Indian independence, we are concluding Mere Mati, Mere Desh campaign as culminating event for Assam to pay tributes to the Veer, brave hearts, who have made the supreme sacrifice for the country by creating memorials in all the villages and towns and taking pledge for holding a fistful of soil, miti, and planting of 75 saplings of indigenous trees in every village. We, along with the rest of the country, are also celebrating Har Ghar Tiranga, movement in which every household in the state is hosting a national flag today atop their houses. Friends, with a tool, hard work and sacrifices of everyone, our state has been able to attain a pride of place among all states in the country. However, we know that we have a lot more to do and many more commitments to fulfill towards our people. This Independence Day, let us all resolve to redouble our efforts, raise above all kinds of differences and ism, and unitedly work for attainment of lasting peace, prosperity, and the highest level of economic development in every nook and corner of the state and for every section of our society. Thank you. Gugnalim. Jai Hind. As a mark of our commitment towards war on drugs, today we shall be taking a pledge for a drug-free Nagaland in the Independence Day programs in all the districts and subdivisions. The Honorable Chief Minister will now lead us and the state in taking the drug-free pledge. Everyone is requested to stand and repeat after the Honorable Chief Minister. I will read slowly and you follow me. On the occasion of the Independence Day 2023, I pledge to make our community, family, friends and ourselves drug-free. I pledge not to consume any form of drugs, narcotics, or psychotropic substances. I shall report to the authorities about any narcotic and psychotropic substances related activities if noticed, which include illicit trafficking, production, manufacture, financing,
possessing, sale, purchase, transportation, concealment, use and consumption of narcotic drugs or psychotropic substance, which are all punishable offences under the NDPS Act 1985. I will take all efforts in my capacity to make Nagaland and India Nasha Mukt or drug free. Together we pledge. Thank you. Ladies and gentlemen, we shall now have the presentation of awards. It is an honor to announce the awardees of the President's Police Medal and Police Medal on the occasion of Independence Day 2023. President's Police Medal for Distinguished Service is awarded to Sri Zempemo Kikon, Assistant Commandant Chumikadima Nagaland. The awardees of the Police Medal for Meritorious Service are Sri Yarantang Uli, Commandant PAG Nagaland, and Srimati Sonia Singh, Special Secretary Nagaland. The awardees of the Governor's Gold Medal 2023 are Srimati Kathin La EAC Noklak, Srimati Mary Penny, Additional State Protocol Officer, Home Department, GAB2, and Sri Vikeshe Chese, DYSP, Nagaland Lokayukta. The following are the awardees of Governor's Gold Medal as announced on Independence Day 2022. The Honorable Chief Minister is requested to kindly do away the honors. Sri Rajkumar M., IFS Divisional Forest Officer, Kohima. He is awarded the Governor's Gold Medal for his innovative initiatives in the field of environment under Project Future, setting up of Project Green Blocks, innovative signages using cartoons and memes, environment video using Jenga, online mode for celebrating World Environment Day. The next recipient is Engineer Kevizun Zeliang, NPS Additional SP Communications, Kohima. He is awarded the Governor's Gold Medal for his exemplary leadership in performing many law and order related duties. He was also detailed for various VVIP duties, including visits of President and Vice President of India. He was also involved in framing of Nagaland Police Telecommunication Organization Subordinate Service Rules 2013. The next recipient is Engineer Y. Akito Sema, Executive Engineer, Electrical Division, Dimapur. He is awarded the Governor's Gold Medal for his utmost dedication in carrying out the duties and responsibilities entrusted to him. His managerial skill has helped in the remarkable increase and improvement of revenue. He also played a major role in creating public awareness and sensitization on the importance of benefits of prepaid meters. The next recipient is Dr. Nyanthang Kikon, Deputy Director and State Nodal Officer, Integrated Disease Surveillance Program. He is awarded the Governor's Gold Medal for his exemplary leadership in leading the state and district surveillance program in mobilizing and identifying preparedness during the pandemic. He was also appointed as State Nodal Officer and spokesperson during COVID-19.
Following are the awardees of Governor's Gold Medal announced on Republic Day 2023. Engineer P. Tiakawa Imchinger, Junior Engineer MIS, Transmission Division, Dimapur. He is awarded the Governor's Gold Medal for his sincerity, dedication in managing and nurturing in the introduction of the State Load Dispatch Center. He is also involved in addressing the issue of system operation, commercial operation, and IT and communication and cyber security. The next recipient is Dr. Anung Laim Dong Pong, Additional Director, DUDA. She is awarded the Governor's Gold Medal for her initiative, innovativeness, and dedication in her duty. She played a major role in establishing Anghia, the retail network, a livelihood initiative in Eastern Nagaland. Monken, a handhold initiative of DUDA, which is an apparel, clothing, and home furnishing brand, was also conceptualized by her. Next recipient is Srimati Audulati Imchen, IPS, SP Woka. She is awarded the Governor's Gold Medal for her courage, dedication, professionalism, and exemplary skills of manpower management. She has been instrumental in conducting raids leading to seizing of drugs, vehicles, liquors, and arms. She has also been effective in the investigation of offences against women and children. The recipient for the Correctional Service Medal for Meritorious Service, announced on the occasion of Republic Day 2022, is Sri Dr. Oben Yantan, Jailer, Central Jail, Dimapur, Nagaland. He receives this award for his exemplary leadership in managing the inmates and bringing out various reformative programs and activities. He has immensely contributed in containing the virus among the inmates during the outbreak of COVID-19 at Central Jail, Dimapur. The recipient for the Asadharan Asushna Kushalta Padak 2021 is Mr. K. Poman Konyak, Havildar, Special Branch Intelligence Establishment, Nagaland. He receives this award for the year 2021 for his outstanding performance and courageous service in the field of intelligence. He is presently posted as ASI DEF No. The Governor's Commendation Certificate awardees on the occasion of Independence Day 2023 are Sri Nokpai Konyak, SDO Civil, Sadar Kohima. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his sincerity, dedication, and an exemplary officer. In the 14th NLA election 2023, he was appointed as Assistant Returning Officer and Nodal Officer for Postal Ballot and handling of EVM and VVPAT machines. He also was a magistrate in the recent issues between MSF and Naga Club. Sri Wongto Chingmak, SDAO, DAO Office, Tuinsang. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his knowledge and collaborative approaches in dissemination of improved technologies to the farming community that have brought a huge differences in the local farming system. The next recipient is Dr. Akaho Sema, Deputy CMO, Zunepoto. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his remarkable and selfless service to the poor and needy in rural areas. He played a major role in the successful containment of COVID-19 pandemic in his posting place. Next recipient is Srimati Nunesenyo S. Liralu, Deputy Project Director, Planning and Transformation, attached to PNAR BIMS. She is awarded the Governor's Commendation Certificate for her personal dedication and hard work, not only in the development of these applications, but also in the subsequent training and handling given to the department. She has shown immense integrity and commitment for transparency and accountable governance. Sri Jupitong Waim Junger, Economics and Statistics Officer. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his exceptional public service and contributions in rationalization of schools and teachers.
He also played a major role in drafting the Nagaland School Education Service Rules in 2017 and also assisted in panel for review of Communitization of Public Institution and Service Act 2002. The next recipient is Sri Chichamo Kikon, ESI, IGP Intelligence Establishment. He is awarded Governor's Commendation Certificate for his noteworthy accomplishments in high-profile cases of highway robberies, drug peddling, and extortions. The next recipient is Srimati K.P. Fullaritsa, ASI Office of Commissioner of Police, Dimapur. She is awarded the Governor's Commendation Certificate for her utmost dedication and also in investigating many crimes against women and child-related cases. The next recipient is Sri Taliran Bamoser, Havildar, Office of the Commissioner of Police, Dimapur. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his remarkable achievements, detecting criminal activities in cases like theft, seizures of arms and ammunition, rescue of kidnapped and abducted victims. The next recipient is Sri Bhaktalal Giri, Scale Man, Food and Civil Supplies, Mobokcho. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his sincerity, sacrifice and efficient work, especially during COVID pandemic with regard to the handling of the public distribution system and food grains under PMG-KAY. The next recipient is Sri M. Yankyuba Pion, DC Office, Twensang. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his honesty, dedication, and commitment towards his duties. He is always available and ready to perform any assigned duties. The next recipient is Sri Keitho Pion, Planning and Transformation. He is awarded the Governor's Commendation Certificate for his exceptional work ethic, going above and beyond his assigned duties to ensure smooth functioning of the office. He has proven to be an invaluable asset, representing the core values of dedication, reliability, and professionalism. And with that, ladies and gentlemen, we've come to the end of the award ceremony. Congratulations to all the awardees. Thank you for your service.
21 Parade contingents are taking part in the 77th Independence Day Parade ceremony. The contingents are led by Parade Commander Sri Vikato Tongger NPS, Deputy Commandant 4th NMB Battalion, Parade 2nd in Command Srimati Jule Nambyong NPS, Assistant Commissioner of Police CP Dimapur. Parade Commander Sri Vikato Tongger NPS, Deputy Commandant 4th NAP Battalion, Parade 2nd in Command Srimati Jule Nambyong NPS, Assistant Commissioner of Police CP Dimapur. 78 Battalion CRPF, led by Inspector K. Jimmy Singh. (37th Battalion PSL, led by Sub-Inspector Abhav Kumar. DEF Kohima, led by APSI Vesena Dechio. (5th IR Battalion, Arunachal Pradesh Police, led by Sub-Inspector Rigo Riba. NAP Battalion, led by APSI Kapuria Cheye. NAP IR Battalion, led by APSI Kevise Sanche. NAP IR Mahila Battalion, led by ABSI Ilika Rossi. Home Guards and Civil Defense, led by Sub-Inspector Dingkam Konyang. Servicemen, led by Naik Kinyewelye Merieso. Uniform Nagaland Independence Company NCC Kohima, led by Junior Under Officer Sunil. Number 1 Nagaland Air Squadron flying NCC Kohima, led by Senior Under Officer Chomlise S. Sangdang. One Naga Girls Battalion NCC Kohima, led by Senior Under Officer Kumjilating Yunchunger Ufi. Scouts and Guides, led by student Sharon Kitkitan. President K. Government Higher Secondary School, led by student Kobu Terno.
School, New Market, led by student Vivier Solo. Mary Higher Secondary School, led by student Pamok Ike Pong. Coraggio High School, led by student Gubie Poza. Nagaland Police Central Brass Band BTS, led by APSI L. Sachamo Muli. Nagaland Police Auxiliary Brass Band, led by Abilder Ayo. Led by W. E-Office is a digital platform that will enhance government operations by streamlining document management and collaboration. It will automate tasks like file tracking and approval workflows, promoting faster decision-making and an eco-friendly work environment. Aligned with the Digital India initiative, E-Office will contribute in progress through efficient use of technology. E-Vigilance is a web app developed by the Department of Information Technology and Communication, Nagaland, in collaboration with the Department of Personnel and Administrative Reforms. It will ensure transparency in administrative processes by digitizing vigilance clearance for actions like promotions and retirements. This app reflects a commitment to ethical, efficient public services while prioritizing fairness and accountability. The Honorable Chief Minister is requested to do the honor of launching the E-Office and E-Vigilance applications.
entertainment and cultural presentation segment. Development will now present a song titled Patriot. All performers are requested to kindly get ready for their आओ झुककर सलाम करे उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनके वतन के काम आता है। मित्र है शरीर मेरा, देश से ही जान है। अकेले में कुछ नहीं, देश से पहचान है। गर्व मुझको खुद पे, भारतीय होना शान है। भारत ही आन और भारत ही शान है। सभ्यता जहाँ से आई देश है वो इंडिया। वासुदेव कुटुंबकम बताया जिसने इंडिया। चांद पे भी जाना होता मुश्किल, अगर जीरो ना बनाया होता इंडिया। राम कृष्ण परशुराम का देश इंडिया। छत्रपति शिवाजी का देश इंडिया। अली भी है यहाँ पे, बजरंग बली भी है यहाँ। सारे धर्म का सम्मान होता जहाँ वो है इंडिया। हाँ इंडिया, ये देश है वीरों का, ये देश है सरदारों का, ये देश है मुसलमानों का, ये देश है वीरों का, ये देश है सरदारों का, ये देश है बलवानों का, ये देश है अलबेलों का। The next item is Mark J. Salam by Women Resource Development Department.
Next we have London Adolescents Girls Club. Their performance is titled Hope Live the Promise. Hope for a better future and to live our promise, never give up our dreams. The London Adolescents Girls Club is designed and implemented by the London State Social Welfare Board with the aim to protect the interests of young girls across the state. It comprises school-going girls between the ages of 10 to 19. The club functions as a safe space, providing support and guidance to young girls. The club members receive vocational training, skills development, counseling, free medical and legal support services, etc. The mission of the club is to empower girls to be agents of change. The NAGC Club has also been identified by the Ministry of Women and Child Development as one of the best innovative activities of the state. Number of participating schools are mainly Christ King High Secondary School, Hornbill High Secondary School, Mary High Secondary School, Oaking Christian School, PN High Secondary School, Mesa High Secondary School, Government Middle School, and Charity School.
Chamber Choir will now present and show Never TV, which literally translates as vibrant culture and tradition. It is written and composed by Mr. Sito Kiho, incorporating Sunni Naga folk motifs. One most important character of folk songs is its simplicity, for which the composer had to include a lot of folk vocabularies, audio, and other folk materials in order to bring out the melody, harmony, and the structure of the overall piece. It is written as a call to rise up and keep our rich folk tradition alive. This piece was first premiered in World Choir Games 2023 at Gangneung, South Korea. Kami lang mata. Bakit ito lain guys yung ito lain. Thank you, Nagaland Chamber Choir, for that riveting performance. Next we have Tafma
They will be performing a song titled Courage Lives.
for a wonderful performance. We shall now have the cultural presentation. The cultural troops performing this morning are Virgin Society Chedema, Aum Media Cultural Organization, the Lami Cultural Troupe Purima, Karo Cultural Troupe Babu, Kamyunam Cultural Troupe Purima, Tobu Area Shebo Kong, Pujui Cultural Troupe Purima, and Shina Koro Million Purima. The Virgin Society Chedema from the Angami Naga tribe is performing Sea Shepherd, which includes both menfolk and womenfolk. Sea Shepherd, which means wooden pulling, a traditional Angami folk song which has a big significant impact on unifying the peace and strength of community participation. In olden days, particularly in traditional Angami villages, it is essential to have a bridge gate to protect themselves from enemies. Most of these gates were carved out from a single large piece of wood, which is then pulled into the spot by the entire village community. Representing the Aum tribe, we have the Aum Region Council Organization. The performance is titled Aum Warrior Feast of Merit Dance o yung particular na nagkakos ano ko This particular dance is regarded as one of the most respected dances among the Aum Nagas. The dance is generally performed in front of the warrior's house who have brought enemies' heads as war trophies, as well as being into the village by saving it from enemies' attack. In this dance, the enemies are portrayed to be on the ground, and the dancers pump their feet on the ground, which signify the enemies have been crushed at the feet. Women and children join together and dance in great enthusiasm. Cultural dance from the Jefferson tribe is presenting Pita Oho. Cultural dance was brought to the village by the Vietnamese leader during the British expeditions
the drums, gongs and the blowing buffalo horn. The chieftain, known as the Matrik or Goira, raises the spirit of the troop by yelling war cries and wielding the milam, which is the warrior's sword. Pochuri culture too. Nazu is an important festival of the Beluri people of Pochuri community. During Nazu, young boys and girls dressed in colorful attires come together in open platform and exhibit their rhythmic steps by singing and dancing folk tunes, narrating of the nostalgic events and sessions. Soji So is victory dance of young warriors, only strong and energetic male to lead the team for a show. Ma Inyo Hiya is another tune narrating how a stepbrother is being protected by the father and friend in times of crisis, while it also displays the importance of unity, equality, and sharing, holding each other's hand while dancing for three. बजरंगबली आओ झुककर सलाम करे उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, खून जिनके वतन के काम आता है। मित्र है शरीर मेरा देश से ही जान है, अकेले में कुछ नहीं देश से पहचान है। गर्व मुझको खुद पे भारतीय होना शान है, भारत ही आन और भारत ही शान है। सभ्यता जहाँ से आई देश है वो इंडिया, वासुदेव कुटुंबकम बताया जिसने इंडिया। चांद पे भी जाना होता मुश्किल अगर जीरो ना बनाया होता इंडिया। राम कृष्ण परशुराम का देश इंडिया, छत्रपति शिवाजी का देश इंडिया। अली भी है यहाँ पे, बजरंगबली भी है यहाँ, सारे धर्म का सम्मान होता जहाँ वो है इंडिया। हाँ इंडिया, ये देश है वीरों का, ये देश है सरदारों का, ये देश है मुसलमानों का, ये देश है वीरों का, ये देश है सरदारों का, ये देश है बलवानों का, ये देश है अलबेलों का। तो इदु थागासे इंडिया पूरा दियाजी 15 अगस्त 2023 डे 77th इंडिपेंडेंस डे मनाइना जाला मोहन दिखि पाइशा और आगे दे मोहन दिखि निशना रेड फोर्ट दिल्ली दे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रा लीड कुरिना ताइब्रा फ्लैग अनफर्ल गुरा बिशते स्पीच दिशे और इदु बिशते कंट्री पूरा दे आजी इंडिपेंडेंस डे दो सेलिब्रेट कुरिना जा निशना नागालैंड दे भी मोहन आगे दे गवर्नर कुरिना आया निशना कोहिमा नागालैंड का कैपिटल कोहिमा दे भी चीफ मिनिस्टर निफ्यूरियो ब्रा लीड कुरिना ताइब्रा pledge can be luishe aro flag unfurl kurina speech can be dina idia cultural performances can di baishe aro idu hi noigina chumugi dima labi mohan cover kurina chaishe dade metsubo jamira special guest kurina independence day lado tade rahi pon hoi jeshe to idia mohan aro kohima de do evening laga performances can be aro cultural services can be thayole ase to edu han la opor de bi mohan update kurina jawo idia karne do man hi ase apni han side ekbi Hornbill TV
दुनियाते थाकिया साफा पानी कुंतु खाली 0.3% আছে ইদু তো খালি খাওলে কাৰণে একলা নহয় ইদু সাফা পানী তো আমি খান এগ্ৰিকালচাৰ তে খাও সামান খান ওলাউলে কাৰণে বি চলাই আৰু ইদু পানী খান ওয়াইল্ড লাইফ সাপোর্ট কৰে একটা হেলদি ফাংশনিং ইকোসিস্টেম দিব কাৰণে ইদু কাৰণে পানী খান তো পলিউশন ফ্ৰী ৰাখিব লাগে আৰু আমি খান লাগা ওয়েস্ট খান মিসামিশি ৰিভাৰ বেংকস খানতে না ফেলাউলে লাগে কুন্তু প্ৰা